Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. So, our today's topic is use of is MR plus infinitives. So, let me introduce. This lecture is from my workshop session. So our workshop, English workshop, will be of almost 10 days, and we will discuss almost 50 plus topics in this workshop, and the fee is only 500. So if you want to join this workshop, you can WhatsApp us at 331 8440522. So this is our WhatsApp number, so you can uh, contact at this number. So our first topic of this workshop, you can say this is our demo lecture, is use of is MR plus infinitives. And you know that infinitives mean 2 plus first form. So definition, first of all, of definition, ismr plus infinitives are used when an action is about to take place. यानी कि जब किसी काम ने वकूअ पज़ीर होना होता है, लाइक इन फ्यूचर, तो तब हम इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव्स को यूज़ करते हैं. दिस इज़ वन डेफिनेशन. लाइक मैं काम करने लगा हूँ, या फिर मैं काम जो या करने लगा था, या करने वाला था, या करने वाला हूँ, इन सब के लिए हम अगर पास्ट में हो तो वाज वर, लाइक दिस वन, वाज वर प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव्स पास्ट के लिए, और इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव्स प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं. सो सेकंड डेफिनेशन इज़ टू शो अ वर्क फॉर विच वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू समथिंग. यानी कि जो काम हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है करने का, या फिर जो काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं. सो ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो यूज़ ऑफ इज़ एम आर प्लस इन्फिनिटिव्स की हैं. लाइक मैं घर जाने लगा हूँ, आई एम टू गो, आई एम प्लस टू गो टू होम, like this. So is MR plus infinitives. So formation you can see here, like structure, subject plus to be verb. To be verb जो है ये is MR was were has have had, जो है ये सारी कौन सी हैं, to be verbs हैं. like let me, is am are was were has have had and been, ये सारी कौन सी हैं, ये टू बी वर्ब्स हैं. सो इज अ सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद टू बी वर्ब्स, फिर इन्फिनिटिव्स एंड देन ऑब्जेक्ट. इन्फिनिटिव्स यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर जस्ट ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. So like see here examples. He is to learn English means he has decided to learn English. He is to learn English यानी कि he has decided to learn English. उसने इंग्लिश सीखने का इरादा कर लिया है. They are to start work, like they have decided to start work. Yeah, like you in negative, like to be, and here not, here to be subject plus to be plus not plus infinitive plus object. Like he is not to learn English, so it means he has not decided to learn English. He is not to learn English. They are not to work, टू स्टार्ट वर्क. सो जब इनका नेगेटिव ना हो तो टू बी फॉर्म्स के बाद सॉरी टू बी फॉर्म्स के बाद
नॉट यूज़ होता है। एंड अगर हमने इनका क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि जो टू बी फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट में आएंगी। लाइक ही इज़ टू लर्न इंग्लिश, इज़ ही टू लर्न इंग्लिश, दे आर टू स्टार्ट वर्क, आर दे टू स्टार्ट वर्क, आई एम टू पनिश यू for your mischiefs. So its negative is I am not to punish you for your mischiefs, and interrogative is am I to punish you for your mischiefs. And the next is was for, use of was for plus to be forms. This is for positive and is am are for present. So here is note. About to and going to can be used instead of is them are, but in spoken session we use gonna instead of going to. Like spoken session में हम going to को क्या करते हैं gonna. Like I am to, I am going to, I am going to. Like I'm to punish you, I'm gonna punish you. So I'm gonna, going to first spoken gonna. He's gonna, she's gonna. So like this. मतलब करने वाला हूँ, अबाउट टू या गोइंग टू, करने वाला हूँ या करने लगा हूँ, इसके लिए ठीक है। अबाउट टू यानी कि वाला हूँ या वाला है। इन पास्ट ही वॉज अबाउट टू स्लैप यू बट आई स्टॉप्ड हिम। ही वॉज यानी कि वो तुम्हें थप्पड़ मारने ही वाला था लेकिन मैंने उसे रोक दिया। सो अगर पास्ट होगा तो अबाउट टू से पहले या गोइंग टू से पहले वॉज वर्ब यूज़ हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट होगा तो इन दोनों से पहले इज एम आर यूज़ हो जाएगा। We can use going to as well, but gonna is contraction of going to. Was were both are used as like is them are, but was were are used in the past. Like he was to come yesterday, but he couldn't come. यानी कि वो कल आने वाला था लेकिन नहीं आ सका। सो सेम इसको हमने अब अगर गाना में लिखना है तो ही वॉज गाना कम yesterday but he couldn't come, या फिर he was about to come yesterday but he couldn't come. We were about to go to our school but our father didn't let us go there. तो अगर इसको हमने दूसरा वी वर टू गो टू आर स्कूल बट आर फादर डिडंट लेट अस गो देयर। सो वाज कहाँ पे यूज़ होना है, वर कहाँ पे यूज़ होना है। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं लाइक ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन लाइक वन नाउन, वन नेम, उन सब के साथ वाज यूज़ होगा। आई के साथ भी वाज यूज़ होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड आई, इसके साथ क्या यूज़ होगा, वाज। ओ द क्रो इज क्रोइंग एंड सॉरी नॉट क्रो, द कॉक इज क्रोइंग एंड वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, इनके साथ वर यूज़ होता है, ठीक। सो इन प्रेजेंट आई एम, she is, he is, and the singular noun is, it is, they are, we are, you are, like this. Okay, so this is our first topic from our workshop, English workshop, which is almost for 10 days, so if you want to join us, you can contact on the given number. Okay, Allah Hafiz.